this opportunity to share very briefly the activities of Sahitya Academy for those in the audience who are new to the Academy. Sahitya Academy, India's premier literary institution, promotes literature in all the 24 Indian languages recognized by it. Apart from promoting literature in tribal and oral traditions of India, the Academy does it by conferring awards in 5 different categories, fellowships in 4 different categories, publishing about 500 literary books, organizing about 600 literary events including seminars and symposia, organizing or participating in about 200 book fairs and exhibitions annually and in all the 24 languages. The Academy also issues travel grants to young writers, publishes the first original work of young authors under Navodaya scheme, organizes language conventions for the unrecognized, unwritten, and tribal languages of India, and organizes many translation workshops every year. Before I conclude, I want to share with all of you our achievements in the past year. In 2024, Sahitya Academy published 484 books, including reprints, that is, 1 book in every 19 hours. Organized 549 literary programs, that is, 1 program in every 16 hours. Conferred 95 awards in 4 categories, Bhasha Samman on 7 scholars, fellowships on 7 distinguished writers, produced 5 documentaries, taking the total number of documentaries on eminent Indian writers produced by the Academy to 175, generated the gross revenue to the tune of rupees 50,67,628 through sale of Academy publications. Added 3,878 books to its library, taking the total tally to 2,59,233. Friends, I gladly welcome Sri Mahesh Dattaniji, distinguished playwright, stage director, and mentor, who has kindly agreed to be with us as the chief guest of this evening. His works as a playwright have been translated and performed in many languages across India and abroad. His works as a director include an adaptation in English of Tagore's story Chokarbali for Barnard College, Columbia University, and adaptation of Lorca's Blood Wedding for ICS Theatre, New Jersey, snapshots of a Fairwood Sunrise written and directed by him. Recently, he worked with This Is Not a Theatre Company in New York to write and direct an audio piece, A Little Drop of Heaven, which was picked by the New York Times as among the top 5 things to catch in New York. His film work as a writer and director includes Mango Soulful in 2000 and Morning Raga in 2003, and is the recipient of Sahitya Academy Award for his anthology Final Solutions and Other Plays. Welcome to Sri Mahesh Dattaniji. I heartily welcome the President of Sahitya Academy, Dr. Madhav Kaushik ji, eminent Hindi writer, who has kindly agreed to preside over this ceremony. He has more than 30 published books to his credit, including poetry collections, short story collections, criticism, children literature, translation, and edited books. He was also the chairman of Chandigarh Sahitya Academy. He is a recipient of Shiromani Sahityakar Samman, Mahakavi Surdas Samman, Babu Balmukund Gupta Samman, Hans Kavita Samman, All India Balraj Sahni Award, Millennium Award, Lifetime Achievement Award from Government of Haryana, etc. Welcome to Dr. Madhav Kaushik ji. I sincerely welcome Professor Kumar Sharma ji, the Vice President Sahitya Academy, who is gracing this occasion. Just 2 days ago, she appointed as Vice Chancellor of Mahatma Gandhi International Hindi University, and before that, she was working as Professor and Head, Department of Hindi, University of Delhi, and she has 13 published books on various subjects such as media, women discourses, and literature to her credit, besides many published articles in reputed newspapers and magazines. She has delivered more than 300 lectures in different Indian universities and important social forums of national and international level. She is a recipient of Sahitya Bhushan Samman, Bharatendra Harishchandra Puraskar, Damodar Chaturvedi Smriti Samman,
Sahitya Shri Samman, etc. Welcome to Professor Kumar Sharma ji. I sincerely welcome the members of our General Council and members of our committed, hard-working staff. I thank them all with the depth of my heart. With these few words, I am glad to welcome all of you once again and also take this opportunity to thank Indian writers community for their continued patronage and support through 71 years of Academy. I thank and welcome the representatives of our print and other media who have responded to our invitation and are sure to give this greatest festival of letters in the country the coverage it deserves. Thank you all. Now I request President Sahitya Academy Dr. Madhav Kaushik ji to address this August gathering. नमस्कार, परम आदरणीय श्री महेश दत्तानी जी, मैडम कुमुद शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट साहित्य अकादमी के श्रीनिवास राव जी, आज 24 भाषाओं के सम्मानित हमारे लेखकगण, उनके परिवार के सदस्य, जनरल काउंसिल और ईबी के हमारे मेंबर्स, दिल्ली का बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक समुदाय, सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। मित्रों, राव साहब ने बड़े संक्षेप में साहित्य अकादमी की जितने भी हमारे कार्य हैं उनको आपके सामने रखा और एक बात बिल्कुल साफ हो गई इस बात से कि हिंदुस्तान में हमसे बड़ा कोई भी प्रकाशन गृह नहीं है। इतनी सारी पुस्तकों के अलावा हम 24 भाषाओं में प्रकाशित करते हैं किताबें, उन भाषाओं में भी जिन भाषाओं की रीडरशिप बहुत थोड़ी है। हमारी किताबें इतनी सस्ती होती हैं जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि इन 70 वर्षों में संपूर्ण भारतीय मनीषा मेधा और सृजनात्मकता को जिस तरह से हमने संरक्षित किया है, प्रकाशित किया है, आपके सामने रखा है, वो एक ऐसा काम है जिसके लिए हम साहित्य अकादमी के आभारी भी हैं और ये भी चाहते हैं कि ये कारवां इसी तरह से चलता रहे। मित्रों, हर रोज़ हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, उसकी 24 भाषाएं हैं, हजारों हजार बोलियां हैं, उसकी भाषाई विविधता बहुत है, लेकिन उसको देखने का अवसर संभवतः नहीं मिलता। एक बार इस सिरे से उस सिरे तक नज़र डालिए, आपको संपूर्ण भारतीय साहित्य अपनी गरिमा के साथ बैठा मिलेगा। ये अकेला एक ऐसा अवसर है साहित्य अकादमी के पुरस्कार अर्पण समारोह में, जब हम अपने पूरे भारतीय साहित्य की सृजनात्मक प्रतिभाओं को और भारतीय साहित्य को संपूर्ण रूप से देख सकते हैं, उसको सराह सकते हैं और उसका अभिनंदन कर सकते हैं। मित्रों, दुनिया में अकेला हिंदुस्तान ऐसा है जहां साहित्यकार को प्रजापति का दर्जा दिया गया है। बहुत सारे देशों में कंसंट्रेशन कैंप में लेखकों को भेजा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। हमारी संस्कृति में कबीरे मनीषी स्वंभू परमभू, वो एक समानांतर संसार की रचना करता है, इसलिए अभिनंदित है वो। सभी उसको प्रणाम करते हैं, चाहते हैं। ये हमारी सभ्यता है। हमें पूरी दुनिया में जाने का मौका मिलता है, विश्व साहित्य के बहुत सारे सम्मेलनों में। वहाँ जाके आँख खुलती है कि हम कितने बड़े साहित्यिक विरासत के मालिक हैं। पूरा यूरोप 5-7 भाषाओं में काम चलाता है। जिस देश की 24 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, हजारों वर्षों की साहित्यिक परंपराएं हैं, साहित्य सृजन है, उसकी संवेदना परिधि का कोई अंदाज लगाए। कोई दुनिया की ऐसी विधा नहीं है जिस विधा में हमारे रचनाकारों ने अपने आप को कलमबद्ध नहीं किया, हमारे सपनों को, हमारी आकांक्षाओं को, हमारे समाज को सामने नहीं रखा। तो मित्रों, वाकई ये जो पूरा हफ्ता
ये हम भारतीय सृजनात्मकता का एक उत्सव मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उत्सव में सभी भागीदार हों। और आप सबको देख के वाकई लगता है कि पूरा हिंदुस्तान आज हमारे इस 24 भाषाओं के रचनाकार भी हैं, उनके परिवारजन भी हैं। तो मैं इन साहित्यकार बंधुओं को जिनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनको के आभारी भी हैं और सबसे ज़्यादा उनके परिवारजनों के भी आभारी हैं, क्योंकि कोई भी साहित्यकार अपने परिवार और परिवेश की उपज ज़्यादा होता है। आपने उन्हें समय दिया। मैं इन लेखकों के सभी पतियों और पत्नियों का, उनके बच्चों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो बुकलेट आपको सर्कुलेट की गई है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो 24 रचनाकार हमारे पीछे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। एकेडमिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से ये नहीं आए हैं। रचनाकार कहीं से भी आ सकता है। एक और बात है, जब हम सारे हिंदुस्तान के साहित्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक पूरे देश का साहित्यकार एक ही तरह से सोचता है, सबका दिल एक ही तरह से धड़कता है और सबके मन में एक पीड़ा है, किसी तरह से सामाजिक बदलाव में हमारी निर्णायक भूमिका हो। ऐसा प्रबुद्ध वर्ग हमारे बीच है। हम इस पलों के वाकई गौरवान्वित होते हैं और ये चाहते हैं कि ये कारवां हमेशा चलता रहे। मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा, और जितने रचनाकार हमारे स्टेज पे हैं उनसे अधिक संख्या में बाहर बैठे हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है, ये भी मैं जानता हूँ। आज का युग बड़ी तेजी से बदल रहा है। शब्द के ऊपर संकट हमेशा रहा है। दुनिया में कोई ऐसा युग नहीं था जब कलम के लिए सुविधाजनक स्थिति हो, लेकिन अब समय और अधिक ज़्यादा संकटपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके सामने और समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तकनीक ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं, लेकिन इस तकनीक का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो बहुत अधिक सुविधाजनक स्थिति भी है। आपकी जेब में जो मोबाइल है, पूरे दुनिया का पुस्तकालय है उसमें। किसी भी भाषा की कोई भी पुस्तक आप पढ़ भी सकते हैं, ऑडियो बुक्स भी बहुत है, सुन भी सकते हैं, किसी तरह का अनुवाद भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम मेरी पीढ़ी को, जो खास तौर पे गांव कस्बों में रहे, जिनको वो सुविधा नहीं थी, आज वो सुविधाएं सारी की सारी आप जेब में लिए घूमते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि हिंदुस्तान का युवा इस टेक्नोलॉजी का गुलाम हो गया है, इसको गुलाम की तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानता। छोटे छोटे बच्चे कई बार बहुत अच्छा सबक सिखा देते हैं। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने जितने नोबेल लॉरिएट्स हैं, सबके लेक्चर मुझे मेरे इस मोबाइल पे सुनवा दिए उसने। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की 24 भाषाओं का संपूर्ण साहित्य आपकी जेब में है, अनुदित रूप में भी और मौलिक भाषा में भी। तो मेरा ये निवेदन है कि हम भी, और साहित्य अकादमी की जो आने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं में हमारे ऑडियो बुक्स भी और ई पब्लिकेशंस भी हैं। समय के साथ साहित्य अकादमी पूरी गति के साथ चलेगी और आपसे निवेदन है, जितना प्रेम, जितना समर्पण, स्नेह और जितना सहयोग आपने अब दिया है, हमें उससे अधिक की आवश्यकता है। मित्रों, साहित्यकारों को सम्मानित करने का ये जो उपक्रम है, सच बात तो ये है कि साहित्यकार तो स्वयं सम्मानित है, हम उनको सम्मानित करके स्वयं गौरवान्वित होते हैं, ये हमारा मानना है। शेक्सपियर के ऊपर एक ओडन का संभवतः एक सोनेट है, उसकी आखिरी लाइन मुझे याद है, महेश को तो पूरी याद होगी। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड एंड सेल्फ ऑनर्ड। ये ऐसे रचनाकार हैं जो अपने स्कूल में पढ़े हैं, अपनी स्कैनिंग खुद करते हैं, स्वयं सम्मानित हैं।
इनको सम्मानित करके हम एक तरह से अपनी उस परंपरा का भी सम्मान करते हैं जो साहित्यकार को प्रजापति का दर्जा देती है। एक बार फिर हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर. Now the Sahitya Academy Awards 2024 presentation, and as per the convention of Sahitya Academy, the Vice President Sahitya Academy will welcome the award winner with a bouquet, and the President Sahitya Academy will present the plaque and also the cash prize of rupees 1 lakh and shawl. So the award in Assamese goes to Samir Thanthi ji. Samir Thanthi is an eminent Assamese poet and writer. He was born on 6 February 1955 in Assam. He holds a master's degree in English literature from Guwahati University. Besides Assamese, he knows English. He started his career in 1983 as sub-editor in Sadiniya Nagarik. He worked with the government of Assam's Department of Tourism from 1984 to 2016. He has 15 collections of poems, 4 books of critical and literary essays, 2 translated collections of Assamese, of Japanese and African poems, and 2 edited short story collections to his credit. He is a recipient of Assam Valley Literary Award, Shabda Botha, Changan Lal Award, and Padmanabha Vidya Vinod Literary Award, among others. Paring Bore Bator Katha Jane is a collection of 42 Assamese poems. These poems vividly portray the northeast India of the post-colonial age with its rich natural beauty, political ups and downs, diverse cultures, high levels of spiritual life, and enviable simplicity. The poems are remarkable for the poet's rare awareness of the time, his thought-provoking focus on death and spirituality, besides deep environmental concern, as they speak of rapid destruction of nature due to aggressive spread of capitalism and the dangers that the contemporary world is facing. The poet dexterously encapsulates many a theme while maintaining impressive simplicity of language. As such, Paring Bor Bator Katha Jane is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Assamese language. Thank you. Award in Bodo goes to Arun Raja, alias Akan Basumtari. Arun Raja, alias Akan Basumtari, is an eminent Bodo writer. He was born on 6 June 1968 at Chetianguri, Bijni, Assam. Besides Bodo, he knows Assamese, English and Hindi. He has his career in private school management.
He has 14 novels and 4 collections of short stories to his credit. He is a recipient of Sameswari Brahma Literary Award and Asha Mushahari Literary Award. Sorni Thake is a Bodo novel that depicts woes and travels of Bodo families. The novel thoughtfully addresses issues of human existence and breakdown of family relations and stands out for its characterization, narrative technique, and deep sensitivity and profound understanding of human existence. The author effectively conveys the suffering and inner turmoil of the protagonist, Mohiram, which evokes sympathy and human warmth. The novel also speaks of contemporary economic issues with acute social concern and is written in a highly relatable language. As such, Sorni Thakai is considered as an important contribution to the genre of Indian fiction in Bodo. Thank you. The award in Dogri goes to late Chaman Arora. That award will be received by his daughter, Molashri Arora. Please have a seat. No, it doesn't matter. Please have a seat. Please. Chaman Arora was an eminent Dogri writer and playwright. He was born on 19 February 1945 in Jammu and breathed his last on 28 August 2024. He was the retired district officer, Agriculture Department of Jammu and Kashmir. He began writing in 1973. He produced the Dogri telefilm Jeene Di Gaid, and he translated several books, including Krishna Chandler Di Chuninda Kahaniya. Many of his short stories have been translated into English, Hindi, Punjabi, Manipuri, Konkani, Rajasthani, and Kashmiri. He regularly contributed to the All India Radio and Doordarshan. He was a recipient of the Best Book Award by J&K Academy of Art, Culture and Languages. Ik Hor Aswathama is a collection of 15 Dogri short stories. The stories encapsulate many a theme like human relationship, dire necessity to improve social ethics, etc. Steadfastly upholding the human values, the author magnificently portrayed the entangled lives of common people in close-knit communities bound by shared beliefs, social norms and practices. The narrative technique the author enjoyed is strikingly experimental. The short stories also portray flaws and strengths of contemporary society with rare sensibility and profound understanding of human life, maintaining excellence of the experimental style. The short stories are outstanding also for super characterization, racy plots, and clarity of expression. As such, Ikhor Aswathama is considered as an important contribution to the Indian short fiction in Dogri. Thank you. The award in English goes to Eastern Kair, but she is under medication. She sent a representative to receive on her behalf. Sayantan Ghosh will receive the award on behalf of Eastern Kair. Eastern Kair is an eminent English writer and poet. She was born on 29th March 1959 in Kohima, Nagaland. She has a doctorate degree in English literature from the University of Pune. Besides English, she knows Hindi, Norwegian and Tinidi language.
languages. She is a publisher also and delivers talks on writing, literature, history and culture. She has 44 publications to her credit, including translations from German and Norwegian. She is a recipient of awards and honors such as Freeword, the Hindu Lit for Life, Tata Book of the Year, Sahitya Academy Bal Sahitya Puruskar, Publishing Next Best Book and Fiki Book of the Year. Spirit Nights is a fictional account of Naga legends and society. Issues of gender and patriarchy are subtly addressed. The pellucid depiction of Naga society is such that the region becomes familiar to all readers. The style has a simplicity, a deceptive simplicity that comes only from a sophisticated storyteller. Not only is the narrative crisp and the characterization of complex, the deep emotional resonance, the novel makes a culture that not many may know intimately, legible and accessible. In these days of strife and division, the novel's powerful call for inclusivity and tolerance is one that should be acknowledged. As such, Spirit Nights is considered as an important contribution to the genre of Indian fiction in English. Thank you. The award in Gujarati goes to Dilip Jhaveri. Dilip Jhaveri is an eminent Gujarati poet, writer and critic. He was born on 3rd April 1943 in Mumbai. He holds an MBBS degree. Besides Gujarati, he knows Hindi, Marathi, English and partly Sanskrit, Sindhi and Bengali. He has 7 publications to his credit in Gujarati and 7 publications in English and other languages. His poems have been translated into many foreign and Indian languages. He is a recipient of Jayant Pathak Prize, Gujarati Sahitya Parishad Award, Gujarat State Sahitya Academy Award, Jeevan Gaurav Award of the State of Maharashtra and Karunanidhi Award. Bhagavanni Vato is a collection of 16 prose poems, but thematically it is a single long poem. It creates a complex collage about God, a serious central theme treated in light and conversational language. It is extraordinarily creative in terms of vibrant imagination, vernacular tones of expressions and metaphors crafted from a multitude of multi-hued images. Under the gauze of tales, the poet endeavors to encompass the entire universe, which creates a complex poetic experience of God and overwhelms human existence with innumerable beliefs, images, and imagination about him. The poem also stitches together fragments of politics, science, history, blending past and present to quilt a unique narrative. As such, Bhagavanni Vato is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Gujarati. थैंक यू. हिंदी में पुरस्कृत गगन गिल. गगन गिल प्रख्यात हिंदी कवयित्री, लेखिका तथा अनुवादिका है. आपका जन्म 18 नवंबर 1959 को हुआ. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की. आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषाओं का भी ज्ञान है. आपने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह तथा
संडे ऑब्जर्वर में 1 दशक से अधिक समय तक साहित्यिक संपादक के रूप में कार्य किया है। आपकी 10 कृतियां प्रकाशित है। आपकी कुछ रचनाओं का अंग्रेजी तथा जर्मन भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको संस्कृति सम्मान, केदार सम्मान, अमर उजाला शब्द सम्मान, द्विजदेव सम्मान, दिल्ली हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। आप आयोवा इंटरनेशनल राइटर्स प्रोग्राम में राइटर इन रेसिडेंसी रह चुकी है। मैं जब तक आई बाहर हिंदी का उत्कृष्ट कविता संग्रह है। कविताओं का आंतरिक स्वर मुख्य रूप से आध्यात्मिक है। कविताएं आध्यात्मिकता और आधुनिकता का दुर्लभ संयोजन प्रस्तुत करती है। इन कविताओं की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि वे एक ऐसी भाषा की खोज करती है जिसमें सतह पर दिखाई देने वाला हल्का कंपन समस्त तनावों और दबावों को अपने भीतर समेट हुए हैं, जैसे बांध पर एकत्रित पानी। यह भी कहा जा सकता है कि ये कविताएं प्रार्थना के एक नए रूप में प्रतिरोध की कविताएं हैं, हर उस शक्ति के विरुद्ध प्रतिरोध जो न केवल मानवता पर बल्कि नारीत्व पर भी हमला करती है। इन कविताओं को काव्य भाषा में तीक्ष्णता लौटाने का प्रयास कहा जा चुका है। मैं जब तक आई बाहर कृति हिंदी में लिखित भारतीय काव्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। धन्यवाद। The award in Kannada goes to K.V. Narayana, but he is not well, so he couldn't able to make it. Award in Kashmiri goes to Sohan Kaul. Sohan Kaul is an eminent Kashmiri writer and playwright. He was born on 17 June 1955 in Parnewa, Kashmir. He holds a doctorate degree in Urdu. Besides Kashmiri, he knows English, Hindi, Persian, and Urdu. He worked as a programmer in Doordarshan from 1981 to 2015. He has 16 novels and 15 plays to his credit. He is a recipient of Sangeet Natak Academy Award, Firak Memorial Award, and Bakshi Memorial Award, among others. Psychiatric Ward is a significant Kashmiri novel. It describes the entire socio-political milieu of Kashmir and is a saga of miseries and helplessness. Using the metaphor of sickness powerfully, it reveals the problems of an ailing society. The development of a genuine sequence of events in a simple language with dialogues in colloquial idiom augments the significance of the novel. The author imaginatively uses factual information in the novel and offers an exceptional narrative and suggests that the human race should create such a world where ease and gratification become the way of life. As such, Psychiatric Ward is considered as an important contribution to the genre of Indian fiction in Kashmiri. Thank you. The award in Konkani goes to Mukesh Thali. Mukesh Thali is an eminent Konkani writer, playwright, critic, and translator. He was born on 5th June 1963 at Madurai, Goa. He holds a bachelor's degree in science. He knows Hindi, English, and Marathi besides Konkani.
He retired as newsreader in 2023 from All India Radio. He has 6 books to his credit and is a recipient of Goa Kala Academy Award, Goa Konkani Academy Award, Kala Academy Award, and Lokmat Writer of the Year Award. Rang Tarang is a collection of 24 Konkani essays. The collection deals with a wide range of subjects. The essays are written in highly poetic and beautiful language, and their seamless, lucid flow is fascinating. The marvelous use of unusual idioms, phrases, and references leaves the reader awestruck. The depth of the message of these thoughtful, reflective essays is stunning. The essays take the reader to the roots of the richness of Konkani language and transport them to the beauty of nature, music, and culture. As such, Rang Tarang is considered as an important contribution to the genre of Indian non-fiction in Konkani. Thank you. मैथिली में पुरस्कृत महेंद्र मलंगिया. महेंद्र झा उर्फ महेंद्र मलंगिया प्रख्यात मैथिली नाटककार तथा शोधकर्ता है. आपका जन्म 20 जनवरी 1946 को बिहार के मधुबनी के मलंगिया में हुआ. आपने बीए ऑनर्स तथा बीएड की उपाधियां प्राप्त की. आपने 5 दशकों तक भारत और नेपाल में नाटकों का निर्देशन किया है. आपको मैथिली के अलावा हिंदी, अंग्रेजी तथा नेपाली भाषाओं का भी ज्ञान है. आपके 12 पूर्ण नाटक तथा 24 अधिक एकांकी, 5 शोध कार्य, 5 कहानी संग्रह प्रकाशित है तथा आपने 5 पुस्तकों का संपादन भी किया है. आपको कलिंग साहित्य महोत्सव पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार, अक्षर सम्मान, हरिप्रसाद कल्याणी नाट्य संगीत पुरस्कार नेपाल, लून करणदास पुरस्कार नेपाल, नेपाल सरकार का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, विद्यापति पुरस्कार नेपाल, प्रबोधन साहित्य सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है. प्रबंध संग्रह 19 मैथिली निबंधों का संग्रह है. ये निबंध वास्तव में खोजपूर्ण प्रकृति के है तथा भाषा और साहित्य के विकास के नए द्वार खोलते हैं. कीर्तनों के प्रकार, लोक कथाओं का उदय, सलहेस लोक नाटक का मंचन, भारत और नेपाल में नाटक चडमल का मूल्यांकन, सामाजिक सुधार में नाटक की भूमिका जैसे विषयों की विस्तृत विविधता को बनाए रखते हुए लेखक लोक संस्कृति की समृद्धि तथा उसकी समकालीन प्रासंगिकता को प्रस्तुत करता है. यह कृति न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विशेष रूप से पठनीय है. प्रबंध संग्रह कृति मैथिली में लिखित भारतीय निबंध साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है. धन्यवाद. Award in Malayalam goes to K. Jayakumar. K. Jayakumar is an eminent Malayalam poet, writer and scholar. He was born on 6th October 1952 in Thiruvananthapuram, Kerala. He holds master's degrees in English literature and in development studies. He knows English, Hindi and Tamil besides Malayalam. He is a former IAS officer who retired as Kerala Chief Secretary.
and is the founding Vice Chancellor of Malayalam University, Tirur. He has 47 books to his credit, 40 in Malayalam and 7 in English. He is a recipient of Kerala Sahitya Academy Award, Kerala Sangeet Natak Academy Award, Asan Prize, Pandalam Kerala Varma Award, Krishna Geeti Puraskaram, Jnanappana Puraskaram, Ettumanuru Somanathan Award, and many others. Pingala Keshini is a collection of 40 Malayalam poems. The poems are exceptional with a plethora of original images, subtle nuances of expressions, with a flowing diction that make them truly ingenious. The poet is on a journey of self-search with a background of shattering preconceived social notions in the contemporary world, while touching the subjects like childhood, womanhood, politics, environmental crisis. The collection of poems can be termed as the poet's representative collection of poems, where his imagery, emotional crisis, existential concerns, and his characteristic irony find eloquent expression. As such, Pingala Keshini is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Malayalam. Thank you. Award in Manipuri goes to Haobam Satyapati. Haobam Satyapati is an eminent Manipuri writer. She was born on 1st February 1954 in Imphal, Manipur. She holds a bachelor's degree in education and master's degree in arts. Besides Manipuri, she knows English and Hindi. She has 8 publications to her credit. She is a recipient of Kaidam Pramodini Gold Medal, Dineshwari Sahitya Award, Rajkumar Shitaljit Memorial Lifetime Achievement Award, and Public Library Poetry Award. Mainu Bada Nungshi Shirol is a long poem written in a prayer chant form based on a tragic love story from the 18th century Manipur. The setting of the story is spread over the geographical area from Manipur to Assam and Tripura. The poem stands tall for its marvelous and gripping diction, composition, and narrative style. Besides, the poet's use of similes, metaphors, and proverbs in the depiction of incidents is remarkable. The poet has successfully portrayed social realism practices, folk elements of the era, while being careful not to mar the contemporary relevance of the characters with any undue exaggeration, and succeeds in embodying them with contemporary social and cultural relevance. As such, Meinu Bora Nungshi Shirol is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Manipuri. Thank you. Award in Marathi goes to Sudhir Rasal. Sudhir Rasal is an eminent Marathi critic and writer. He was born on 10th August 1934 in Aurangabad, Maharashtra. He holds master's and doctorate degrees. Besides Marathi, he knows Hindi and English. He retired as a professor of Marathi from Dr. Baba Sahib Ambedkar Marathwada University, Aurangabad.
He has 6 books to his credit. He is a recipient of Jeevan Sadhana Puraskar by Baba Saheb Ambedkar, Marathwada University, Ashok Kelkar Puraskar by Maharashtra Government, Jeevan Vritti Puraskar by Sahitya Sanskriti Mandalam, Jeevan Gaurav Puraskar by Marathwada Sahitya Sammelan, and many others. Vindache Gaddiru is a significant work of metacriticism and discussion in detail critical writings of Vinda Karindikar, Jnanpith Award-winning distinguished Marathi poet and critic. The author simultaneously dismantles the recognizes Karandikar's literary criticism. His critique of Professor Karandikar's poetics thoroughly explains Karandikar's theoretical position and establishes that Karandikar has explored a new theory named literature, a vital art, and also that literature is entirely different than the fine arts and it offers new vision of life while other arts offer a feeling of form. It firmly comes up with the new vision that literature cannot be a part of the fine arts. As such, Vindache Gaddiru is considered as an important contribution to the genre of criticism in Marathi. एक आदमी तो खड़ा हो जाइए बगल में बैठिए खड़ा हो जाइए Award in Nepali goes to Yo Baral Anant. Yuva Baral Anant is an eminent Nepali writer. He was born on 6 April 1973 in Biring, Pokyang, Sikkim. He holds a bachelor's degree. Besides Nepali language, he knows Hindi and English. He works with the Sikkim government power department. He has published 1 collection of poems and 3 short story collections. He is a recipient of Shasta Puraskar, Rachana Katha Puraskar, Samaya Katha Puraskar, Dr. Shobhakanti Thigim Lepcha Smriti Puraskar, Tulsi Kashyap Smriti Puraskar, Lalman Sancharani Puraskar, Kavya Ratna Sri Puraskar, and Vishwa Shanti Kavya Setu, among others. Chichi Mira is a collection of Nepali short stories. The short stories encapsulate several aspects of contemporary Nepali society and thought-provokingly speak of current social, cultural, economic, educational, and political scenarios. The author strikingly narrates the rural milieu and attacks social stereotypes, discrimination, and the disharmony that is brought about by urbanization. The tableau of Nepali culture is marvelously depicted in the short stories. The author's insistence on the new generations to become aware of traditional and cultural heritage is rare and genuine. The short stories are also singular in the art of characterization and narrative technique. As such, Chichimira is considered as an important contribution to the genre of Indian fiction in Nepali. Thank you. The award in Vodia goes to Vaishnav Charan Samal. Vaishnav Charan Samal is an eminent Odia writer. He was born on 27 February 1939 in Kendrapara, Odisha.
He holds a D.Litt degree. Besides Odia, he knows English, Sanskrit, Hindi, and Bengali. He was head PG Department of Odia, Utkal University, and also of PG Department of Odia, Vishwabharati Shantiniketan. He was a member of Odisha Sahitya Academy for 2 terms. He has published more than 160 books in different genres like criticism, poetry, short story, Ramya Rachna, and essays, children literature, monographs, etc. He is a recipient of Kadambani Sahitya Samman, Nikila Utkal Bagmi Samman and Puraskar, Pandit Godavari Mishra Samman, Hare Krishna Mehtab Samman, Fakir Mohan Samman, Mayadhar Mansingh Samman, Shrabani Sahitya Samman, Jagmohan Lal Samman, Gan Kavi Vaishnav Pani Samman, and Kabivara Radhanath Ray Samman, among others. Bhuti Bhakti Vibhuti is a collection of 32 literary essays on transcendental Indian philosophy and the Bhakti tradition. The author has penned greatly enriching essays with spiritual musings, focusing on the qualities like empathy, compassion, and renunciation. The author is committed to the continuing quest of life with absolute sincerity and dedication. He has particularly emphasized on the tradition and transformative values in Indian literature. Through its profound reflections, the book also emphasizes on divine bliss, devotion, and grace. As such, Bhuti Bhakti Vibhuti is considered as an important contribution to the genre of Indian non-fiction in Odia. Thank you. Award in Punjabi goes to Paul Kaur. Paul Kaur is an eminent Punjabi poet. She was born on 15th May 1956 in Patiala, Punjab. She holds master's and doctorate degrees in Punjabi. She retired as associate professor from S.A. Jain College, Ambala. Besides Punjabi, she knows Hindi and English. She has 10 poetry collections, 2 works of non-fiction, 1 book of criticism to her credit. She has also edited 3 poetry collections. 4 books have also been brought out on her works and life. She is a recipient of Rag Puraskar, Twarik Ratan Award, Parminder Jeet Yadgiri Samman, Tara Singh Yadgiri Samman, Bhati Santhok Singh Samman, Baba Farid Samman, and Lopamudra Samman, among others. Sun Gunvanta Sun Buddhivanta, Itihas Nama Punjab is a collection of long poems about the historicity of the region of Punjab. The poet begins it with the advent of civilization in the region and thoughtfully journeys through history, eventually holds dialogues with Maharaja Ranjit Singh and Maharaja Dalip Singh. The poems make sincere attempts to understand the myths, ancient treatises, various ideologies, and how these ideologies influence the people. The poems, with rare sensitivity and thought, depict the struggle of the natives of Punjab against the invaders and their rise from ashes. The poet has named the long poems after mystical and ideological symbols, with artistically fabricating the poems in the meters and metaphors prevalent during the era. As such, Sun Gunvanta Sun Buddhivanta, Itihas Nama Punjab is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Punjabi.
थैंक यू। राजस्थानी में पुरस्कृत मुकुट मणिराज। मुकुट मणिराज प्रख्यात राजस्थानी कवि और लेखक है। आपका जन्म 30 दिसंबर 1955 को कोटा राजस्थान में हुआ। आपने एमए तथा बीएड की उपाधियां प्राप्त की। आपने राजस्थान सरकार में शिक्षक के रूप में कार्य किया तथा आप प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपको राजस्थानी के अलावा हिंदी भाषा का भी ज्ञान है। आपकी राजस्थानी और हिंदी में 12 कृतियाँ प्रकाशित है। आप कविता, गजल, गीत तथा मुक्त छंद लिखते हैं। आपको राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी के आगवान पुरस्कार, घनश्याम दास शराफ स्मृति राजस्थानी पद्य पुरस्कार, कवि लक्ष्मी नारायण मालव स्मृति पुरस्कार, राजस्थानी काव्य रत्न सम्मान तथा कई अन्य सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। गाँव और अम्मा राजस्थानी में मुक्त छंद में लिखित 50 कविताओं का संग्रह है। कवि ने घटते मानवीय मूल्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए परंपरा पर आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कविताएं गहरी संवेदनशीलता तथा दुर्लभ विश्व दृष्टि के साथ उस विशेष पीढ़ी को प्रस्तुत करती है जो ना तो अपने ग्रामीण परिवेश को घोड़ कर सकती है और ना ही शहरी जीवन को स्वीकार कर सकती है। कवि ने माता पिता और उनके बच्चों के जटिल मनोविज्ञान को सफलतापूर्वक दर्शाया है। कविताएं लोक संस्कृति, सामाजिक नरकासुरम का संस्कृत में तथा विवेक चूड़ामणि कहुआ भर्तृहरि शतक त्राय का असमिया में अनुवाद किया है। आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, शिक्षा रत्न पुरस्कार, संस्कृत सेवा सम्मान, डॉक्टर वी राघवन पुरस्कार तथा काठिया दास स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भास्कर चरितम एक सुंदर कविता है जो सामान्य रूप से असम तथा विशेष रूप से राजा कुमार भास्कर वर्मा के प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास का वर्णन करती है। राजा भौम राजवंश के थे तथा 7वीं शताब्दी ईस्वी में शासन करते थे। वे वैदिक परंपरा के संरक्षक थे। फलस्वरूप संस्कृत को एक भाषा के रूप में उनके दिनों में अधिक महत्व मिला। यह आसाम के इतिहास पर प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा सुंदर कविता है। विषय वस्तु असम के शिलालेखों से मेल खाती है। कविता सरल और स्वाभाविक रूप से सुंदर शैली में तथा एक ही छंद में रची गई है। कवि ने कुशलतापूर्वक तथा दुर्लभ प्रतिभा के साथ राजा की वंशावली को दर्शाते हुए उसके शासनकाल का काव्यात्मक सौंदर्य के साथ चित्रण प्रस्तुत किया है। भास्कर चरितम कृति संस्कृत में लिखित भारतीय काव्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है।
धन्यवाद। संताली में पुरस्कृत महेश्वर सोरेन। महेश्वर सोरेन प्रख्यात संताली लेखक और नाटककार है। आपका जन्म 18 जनवरी 1980 को मयूरभंज बटिया आपका जन्म 18 जनवरी 1980 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। आपको संताली के अलावा उड़िया, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान है। आपकी 4 कृतियाँ प्रकाशित है। आपने 2 संताली फिल्मों दुलाल माया तथा धर्म दरबार की पटकथाएँ लिखी है। आपको बाग्मी विश्वात्कर साहित्य सम्मान, उत्कल सम्मिलानी के नाट्य सारथी पुरस्कार, विशेष विकास परिषद मयूरभंज से वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ लेखक श्याम सुंदर हेम्ब्रम पुरस्कार, पंडित रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। सोचेत सावतारण आंध मानवी संथाली में उत्कृष्ट पूर्ण दीर्घ नाटक है। यह कृति संताल समाज में शिक्षित लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव की एक सशक्त नाटक प्रस्तुति है। आपने शिक्षित संताल लोगों की स्वार्थी जीवन शैली का खूबसूरती से चित्रित किया है, जो अतीत में समाज में कभी नहीं थी। विभिन्न सामाजिक स्थितियों की नाटकीय प्रस्तुति प्रभावी ढंग से की गई है। यह नाटक समकालीन सामाजिक मुद्दों के उत्कृष्ट चित्रण के लिए उल्लेखनीय है तथा अपने असाधारण चरित्र चित्रण, सजीव कथानक, सहज भाषा तथा वास्तविकता और कल्पना के बीच उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखने के कारण आंखों खोल देने वाला है। सोचित सावतारेण आंधम मानवी कृत संताली में लिखित भारतीय नाट्य साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। धन्यवाद। अवार्ड इन सिंधी गोes to हुंदराज बलवानी। हुंदराज Balwani is an eminent Sindhi writer. He was born on 9 January 1946. He holds Bachelors of Education, Masters of Arts and Doctorate degrees. Besides Sindhi, he knows Hindi and Gujarati. He has published more than 200 books in Sindhi, Hindi and Gujarati. He is a recipient of Sahitya Akademi Bal Sahitya Puraskar, Sahitya Gaurav Award, Sahitya Sham Award, Meera Smriti Samman, Hindi Bhasha Samman, Sovietland Nehru Award, Akhil Bharat Sindhi Boli and Sahitya Sabha International Award, वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान, दादा सेवक भोजराज अवार्ड, भारतीय बाल शिक्षा परिषद अवार्ड, भारतीय बाल कल्याण संस्थान and Indo-Soviet Cultural Society among others. Purjo is a collection of 11 Sindhi short stories. The stories in the collection bring forth contemporary social evils and brilliantly depict the constant effort of human beings to achieve peace in a poetic society and subsequent exploitation. The central concern of the short stories is to portray humanism in a globalized world, the conflicts of ideologies influencing the human life and culture. The author has artistically and effectively used simple and lucid language which is easy for the readers to observe while preserving the literary gravity of the stories. As such, Purjo is considered a significant contribution to the genre of Indian fiction in Sindhi.
Thank you. The award in Tamil goes to A.R. Venkatachalapati. A.R. Venkatachalapati, born on 30th June 1967, is a professor at the Madras Institute of Development Studies, Chennai. A historian by training, he is also a translator and editor. Working in the interface of literature and history, he specializes in the social, cultural, and intellectual history of modern Tamil Nadu. Apart from his scholarly writings in English, Venkatachalapati has written, edited over 30 books in Tamil. His publications in English include Swadeshi Steam, V.O. Chidambaram Pillai, and the Battle Against the British Maritime Empire, The Brief History of a Very Big Book, Tirunelveli Eluchium Va U Chi Yum, 1908, The Making of the Tamil Encyclopedia, etc. He has taught at universities in Tirunelveli, Chennai, and Chicago, and was the ICCR Chair Professor in Indian Studies at the National University of Singapore. He is a recipient of the V.K.R.V. Rao Prize and the Mahakavi Bharati Award. He has received the Vilakku Pudumai Pittan Award in 2018 and E.L. Viruddu in 2021, both for lifetime contribution to Tamil. Tirunelveli Eluchian Vavu Siyum 1908 is a lively and gripping narrative of series of events which took place at the height of the Swadeshi movement. On 13 March 1908, following the arrest of V.O. Chidambaram Pillai, a great nationalist and patriot, the people of Tirunelveli and Tuticorin rose up in protest. They attacked British government offices and burned European establishment. Following this, the police, under the leadership of the district magistrate, opened fire and killed many protesters. More than 100 protesters were convicted. In an act of collective retribution, a punitive police force was stationed. This protest found detailed mention in the infamous Sedition Rowlatt Committee report. This book, based on hitherto unknown documents, describes in chiseled prose not only the events but also the causes and consequences of the protest. Vivid in its narrative style, the book is full of interesting information. As such, Tirunelveli Eluchium Vavu Chiyum 1908 is considered as an important contribution to the genre of non-fiction in Tamil. Thank you. Award in Telugu goes to Penugonda Lakshmi Narayana. Penugonda Lakshmi Narayana is an eminent Telugu writer and critic. He was born on 1st May 1954 at Palnadu district, Andhra Pradesh. He holds bachelor degree in arts and in law. Besides Telugu, he knows English. He is an advocate by profession. He has compiled, edited, and co-edited more than 100 books and also written more than 200 literary essays. He has been associated with the Progressive Writers Association since 1974 and is currently its president. He is the recipient of literary award from Potti Sriramulu Telugu University, Kavi Sandhya Pratibha Puraskaram, Guttikonda Subbarao Literary Service Award in 2024, Telugu Official Language Award by Andhra Pradesh State Government, and the Distinguished Literary Figure Lifetime Achievement Award. Deepika is a collection of 36 critical essays in Telugu. The essays cover topics of cultural renaissance movement, the necessity of cultural policy, and highlight the solidarity of the poets and writers of Andhra Pradesh during the Telangana armed struggle during the years 1947 to 1951. The essays in the collection are incisive, in depth, and showcase
the critical acumen of the author and offer profound knowledge of and rare insights into social and literary culture. The language of the essays is simple, excellently relatable, and avoids jargon. As such, Deepika is considered as an important contribution to the genre of Indian criticism in Telugu. Thank you. The award in Urdu goes to Atikullah. Thank you. Adithanar is an eminent Urdu poet, critic, and dramatist, born on 2nd July 1940 at Ujjain in Madhya Pradesh. He holds a doctorate degree in Urdu literature from Marathwada Ambedkar University, Aurangabad. Retired as a professor from the Department of Urdu, University of Delhi. He knows English and Hindi besides Urdu. He has more than 25 publications to his credit. He is a recipient of several awards and honors such as Iqbal Samman, Pandit Dattatreya Award of Urdu Academy, Delhi, and Uttar Pradesh Urdu Academy Award, among others. Bain-ul-Ulumi Thanthi is a collection of 23 essays, an interdisciplinary study of creative writing in Urdu. This work deals with the analysis of an assessment of modern Urdu criticism. Considered a significant contribution to Urdu literary criticism, particularly for its nuanced approach to interpreting literature, the work fulfills the demand of the present era of technological advancement. As such, Bain-ul-Ulumi Thanthi is considered as an important contribution to the genre of Indian criticism in Urdu. Thank you. With this, I once again congratulate all the award winners. And also thank the President, Vice President, and all the jury members who selected these wonderful writers. Now, whereupon the chief guest of this evening, Mahesh Adithanar ji, to address this august gathering. कहाँ चले? That was the most intense education I've had on 23 writers in one hour. Thank you very much, यहीं से जाना पड़ेगा। for that education. हम यहाँ से जाके ना और उधर नीचे चले जाएंगे। इधर आ जाइए। And 700 writers together in the same space. I am delighted to participate in this festival of letters and be a part of this community of wordsmiths, ideologists, storytellers, उधर से this is the mega show of writers. आ जाओ। Like the Oscars for Indian writers. इधर से चले जाए नीचे। But with a difference, आ जाओ। that is unlike our friends in show business. We don't walk the red carpet. We don't wear designer clothes. We don't drive up in Audis and limousines. We are here to humbly acknowledge achievements, accept awards, and with grace, quietly return to our work, making the world a little better than it was before we came into it.
But today, more specifically, belongs to these 23 great writers who've been selected as the greatest writers of the year 2024. I don't think any other country's Academy of Letters has this privilege of felicitating such a linguistically diverse group of writers among their citizens. This ceremony now symbolizes what the world needs most today, acknowledging diversity. And we lead by example. Whatever identity we as Indians wish to address ourselves. इधर लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। हम सब पोटर है, कंफर्म பண்ணி தான் போட்டோம். वो आएगा बाइट देने ना, मैंने कंफर्म किया ना. हाँ ಇಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ और बस्तर वाले पूरे तरह फूल वूल चिपक वो जाएगा। अरे फूल वूल उधर वो नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा. नहीं जाएगा। भीड़ अच्छा नहीं कितना है, है? भीड़ बहुत है, सब निकलेंगे. इधर से अपने यहाँ पे ले लेंगे अपना। कितना है अभी? वो थोड़ा सा ना 1 मिनट पकड़ना, उधर करियो, टॉयलेट आ रहा है ना फ्रेम में पीछे थोड़ा, उधर कर टॉयलेट और आगे कर दे, बस यहाँ लगा है। टेक्स्ट पर नहीं हेलो ऑडियो चेक 1 2 3 हेलो 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 ऑडियो चेक 1 2 3 ऑडियो चेक 1 2 3 चेक 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 चेक. हेलो ऑडियो चेक 1 2 3 अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं, अभी बहुत टाइम है। मैं कुछ नहीं बोला यार. Love you. Don't agree me. I'm only one man. बिग मैन, नॉट वन मैन. अरे नीचे तार दो, नीचे रखो यार। आपको देखता तो मेरे को दिक्कत होती है। दो 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 बॉक्स। ऑडियो चेक करेंगे. चेक 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 चेक. स्वागत है का हमें मैं कह रहा हूँ स्वागत है का मधी वृद्ध ठीक. अरे 1 मिनट करो ना भाई। हाँ आ जाओ। वाइट बैलेंस है. ठीक है ठीक है, बंद कर दो। ठीक है, येलो लाइट है। ठीक है, लाइट हैं? येलो लाइट का है। दिमाग में मारना है। कितना टेम्परेचर चेक करना, येलो लाइट क्या कुछ चेक करना है?
चलो चलो 6 टीवी ऑफ कर रहे हैं ओके मैम
अरे फूलों का स्मेल आने में एलर्जी हो जाता है.
लेके आ जाए स्वामी उनको, फोटो लेके आ जाए, लेके आ जाए। लेके आ रहे बोल देंगे और माइक लेके चले जाते, चले जाना माइक लेके जा, कैमरे से नहीं पहचाने। माइक की जरूरत नहीं है, वैसे होगी हमारे बोलने से। हाँ भाई माइक लेके चले जाना।
அப்படியே வாங்க, அதான் நல்லது, நல்லா இருக்கு. இது வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். साथ अच्छा है அப்படியே அந்த இந்த விருது சம்பந்தமாக என்னுடைய உணர்வுகள், இந்த மாதிரி விடுதலை போராட்டம் சம்பந்தமாக ஆய்வு களத்தில் இன்னும் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஆய்வுகள் குறித்து உங்களுடைய ஊக்கமான சில கருத்துக்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கும், கடல் மாதிரி இருக்கும். விருது பற்றின உங்கள் உணர்வு. கேமரா பார்க்கணுமா? லென்ஸ் மட்டும் பாருங்க. ஓகே. வணக்கம். சொல்லுங்கள். வணக்கம். கடந்த 35 ஆண்டுகளாக சாகித்ய அகாடமி நிறுவனத்துக்கு நான் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறேன். அதற்கு முக்கிய காரணம் அதனுடைய நூலகம். மிக அற்புதமான ஒரு நூலகம். அந்த நூலகத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தவன். அதன் பிறகு கடந்த 25 ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கக்கூடிய இலக்கிய விழாவினுடைய கருத்தரங்கத்திற்கு நான் பலமுறை அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த கருத்தரங்கங்களே கலந்து கொண்டு தமிழை பற்றி கட்டுரைகளை வாசித்திருக்கிறேன். அந்த சமயத்தில் இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமான அறிவாளர்கள், அறிஞர்கள், பேராசிரியர்கள், இலக்கியவாணர்கள் இவர்களை எல்லாம் சந்தித்து உரையாடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் இந்த விழாவிலே சாகித்ய அகாடமி விருது எனக்கு கிடைக்கும் என்று நான் என்றைக்குமே எதிர்பார்த்ததில்லை. அந்த விருது கிடைத்ததும் இங்கு வந்து இந்த விருதை பெறுவதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது. அதிலும் முக்கியமாக நான் எழுதிய பல நூல்களில் வஉசியை பற்றிய நூலுக்கு விருது கிடைத்திருப்பது என்பது எனக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை தருகின்றது. ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான நவீன ஆளுமைகளில் ஒருவர் வஉசி. இவர் இளைஞர்களுக்கு, இளையோருக்கு, இந்த காலத்திற்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக விளங்கக்கூடியவர். தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு இந்தியாவினுடைய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றிலும் சமூக நீதி வரலாற்றிலும் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு மிக மிக முக்கியமானது. அது இன்னமும் தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியே அதிகம் அறியப்படாமல் இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் வஉசி பற்றிய ஒரு நூலுக்கு விருது கிடைப்பது என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே வஉசியினுடைய புகழ் மட்டுமல்லாமல் இந்திய விடுதலை போராட்டத்திலும் சமூக நீதி போராட்டத்திலும் தமிழர்கள் ஆற்றிய முக்கியமான பங்கினை பற்றி அயலவர், தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அந்த வகையிலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி. கடைசியாக இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தி நான் என்ன நினைக்கின்றேன் என்றால், புனைவு அல்லாத ஒரு எழுத்து, வரலாற்றுத்துறை எழுத்திற்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்திருப்பது என்பது இளையோருக்கு, இளம் வயதினர் இந்த துறையில் ஈடுபடுவதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். இந்த விருது கிடைப்பதற்காக என்னுடைய ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவி செய்த எண்ணற்ற நண்பர்களுக்கும், அன்பர்களுக்கும், தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் இந்த வேளையிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். இது போன்ற இந்த வரலாற்று நூல்கள் தற்போதைய இளம் தலைமுறையினர் முறையாக வந்து சேர்ந்த திரும்ப சொல்லுங்கள். இது போன்ற வரலாற்று நூல்கள் வந்து தற்போதைய இளம் தலைமுறையினர் போய் சேர்ந்து ஸோ எந்த அளவு போய் சேருது, முறையாக வந்து போய் சேர்ந்து, ஏன்னா அவர்கள் எதிர்காலத்தில் வந்து நான் எழுதத் தொடங்கிய காலத்திலே வரலாற்று நூல்களுக்கு வாசகர்கள் மிக குறைவாக இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போது கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே இளையோர் பலர் தேடி தேடி படிக்கின்றனர், வரலாற்று நூல்களை படிக்கின்றனர், என்னுடைய நூல்களை படிக்கின்றனர். ஆகவே இந்த ஒரு சூழ்நிலை மாறி வருகின்றது. அல்புனைவு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த துறையிலும் வரலாற்று துறையிலும் இளையோருக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. பல இளம் ஆய்வாளர்கள் புதிய புதிய தலைப்புகளை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். தமிழக வரலாற்றுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கின்றது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். நன்றி. வணக்கம்.
Your support.